Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So here I am with lecture number 2 of Human Health and Disease, where we are going to talk about the types of immunity. So अगर आपने lecture 1 देखा है, तो it was just an introduction of the chapter where we have talked about the several terms which we are going to use in this chapter again and again. ठीक है, तो यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है, जहां पर हम इम्यूनिटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम एंड एक इम्यूनिटी को हम इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, सो इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है. सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी. पहले वाले को हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, सो पहली इम्यूनिटी कौन सी है? इनेट इम्यूनिटी है. सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So innate immunity is a one which is present since birth. जो जब when the baby is born, at that time the baby is having this immunity in him. ठीक है, तो वो immunity उसके अंदर बचपन से ही रहती है. And acquired immunity is the one which develops after birth. तो जब birth के बाद when we are exposed to various pathogens, तो उसके बाद जब अब हमारे अंदर जो immunity develop होती है उसको हम कहते हैं acquired immunity. ठीक है, so दो टाइप की इम्यूनिटी है. एक जो पहले से सिंस बर्थ प्रेजेंट है जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और एक जो डेवलप होती है आफ्टर बर्थ जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. तो जो इनेट इम्यूनिटी है इज एज इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, तो यहाँ पर कोई भी प्रीवियस एक्सपोजर, यहाँ पर कोई भी एक्सपोजर ऑफ पैथोजन नहीं हुआ है. राइट, सो देयर इज नो एक्सपोजर ऑफ पैथोजन. तो जब पैथोजन ही नहीं गया है, एंटीजन ही नहीं गया है, तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा क्या? नहीं होगा. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है? जब बॉडी में कोई एंटीजन जाता है. तो अब यहाँ पर जब कोई एंटीजन ही नहीं गया है अभी तक, तो ऑब्वियसली कोई भी एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यहाँ पर द पर्सन इज एक्सपोज्ड टू पैथोजन. ठीक है, जैसे जैसे लाइफ आपकी जाती है वैसे वैसे ऑब्वियसली यू आर एक्सपोज टू वेरियस पैथोजन. तो वो पैथोजन के वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, एंड दैट इज व्हाई योर द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. सो इन इनेट इम्यूनिटी में एज देयर इज नो एक्सपोजर टू पैथोजन, so there are no antibodies produced, and in acquired immunity as there is an exposure to pathogen, antibodies are produced. Okay, so now let us first talk in detail about innate immunity. ठीक है, innate immunity के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. Acquired immunity will talk on next lecture. As I told you in the start only, I'm going to keep the lecture short because I know malaria was too big. It was like half an hour. I can understand sometimes it's like a long lecture, but still I'm trying ki I'll upload this lectures फटाफट से, but you know, with the short videos. ठीक है, चलो, without wasting time, let's get started and talk about innate immunity in birth. So innate means inborn, which is present since birth. So that is why this immunity is also called as natural immunity. तो ये immunity birth से present है, inborn है, इसीलिए हम इसको natural immunity कहते हैं. So यहाँ पर the child is having an inborn capacity of a body to resist pathogen. It means that जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसके वजह से पैथोजन रेसिस्ट हो सकता है. ओके, उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो कैपेसिटी होती है कि द चाइल्ड कैन रेसिस्ट दोस पैथोजन, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू फॉरेन सब्सटेंसेस. इसीलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनती है. इसीलिए innate immunity is also called as non-specific immunity. What is it called? Non-specific immunity. So now let us understand the mechanism of innate immunity. चार important चीजें हैं यहाँ पर जो आपकी NCERT बोलती है. First one is anatomical barrier, second one is physiological barrier, third one is phagocytic barrier, and the fourth one is inflammatory barrier. So these are the four different barriers, ठीक है, जहां जिसके बारे में हम innate immunity में बात करेंगे. मतलब these are the things which are already present in a child and it is giving him the immunity, that is the innate natural non-specific immunity. तीनों words important है, MCQ में कैसे भी पूछा जा सकता है. Okay, so now let us talk about the first one, that is anatomical barrier. Anatomy मतलब कहीं ना कहीं you can easily relate कि उसका मतलब होता है body features, correct?
So anatomical barrier मतलब here we are going to talk about the body structure. So body में कुछ चीजें हैं which is going to, हमारे body के structure में कोई चीजें हैं यहाँ पर which is going to prevent entry of microorganism inside the body. Can you think about something like that? Yes, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बचपन से हमारे पास है जिसके वजह से पैथोजन अंदर नहीं जा रहा है? That is त्वचा, that is skin, correct? तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आता है स्किन. सेकेंड आता है म्यूकस मेम्ब्रेन. तो जब बच्चा पैदा होता है तो ही हैज स्किन, ही हैज म्यूकस मेम्ब्रेन. तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसके अंदर भी वही म्यूकस बना रही है जो आज हमारे अंदर बन रहा है. यस और नो? एंड वो म्यूकस की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है, जो पैथोजेंस है, वो ट्रैप हो रहे हैं एंड इट इज रेसिस्टिंग द इन्फेक्शन. राइट? तो स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट्स अ डेड लेयर which prevents the entry and growth of microorganisms. So this skin is also present in a child since birth, part of this, correct? Next comes the mucous membrane. So ये देखो mucous membrane है ये, जहां पर ये है mucous cell. क्या कहते हैं हम इनको? Anybody? Yes, you remember? इनको हम कहते हैं goblet cell. क्या कहते हैं हम इनको? Goblet cell, जो कि mucus बनाते हैं. And this mucus is very sticky and helps to trap the microorganism. Okay? तो एनाटॉमिकल बैरियर में आपको याद रखना है कि आपका स्किन है, देन म्यूकस है, एंड ये जो म्यूकस की कोटिंग है वो आपके सारे ट्रैक्ट्स में है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में है, एंड एवरीवेयर इट इज हेल्पिंग टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रेसिस्ट द इन्फेक्शन. Okay, apart from that we do have cilia, which also helps to drive, it also helps to remove the microorganism out. Okay, so that is about your anatomical barrier. Here we talked about skin, here we talked about mucus and cilia. Coming to the next part, that is physiological barrier. So physiological barrier means, what does it mean? Physiological matlab there would be something physiology in the body which would be preventing the growth of microorganism, correct? So it prevents the growth of many invading pathogenic microorganism. तो बहुत सारे जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हमें बचाती है. तो हमारे बॉडी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं फिजियोलॉजिकली बॉडी वाइज? तो पहला है आपका बॉडी टेम्परेचर. सेकेंड हम पढ़ेंगे अबाउट पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी. थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी सेक्रीशन. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं हमारी बॉडी में जो सिंस बर्थ ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इट इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम इन्फेक्शन. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बॉडी टेम्परेचर. So normal body temperature is around 37.5 degree Celsius, correct? तो ये टेम्परेचर पे जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं दे आर फंक्शनल. So at this temperature body cells are functional. बट जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एलिवेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, राइट? सो व्हेन इट राइजेस, उसको क्या कहते हैं? फीवर, करेक्ट? कॉमन लैंग्वेज में बुखार, फीवर, राइट? बट मेडिकल लैंग्वेज में एक्चुअली उसको पायरेक्सिया कहते हैं. तो जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज फीवर और पायरेक्सिया. सो ये हाई टेम्परेचर में हमारे बॉडी के सेल्स तो फंक्शनल होते हैं. सो आवर बॉडी सेल्स आर फंक्शनल, बट जो पैथोजन ग्रोथ की जो पैथोजन की जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है. ओके, सो बॉडी टेम्परेचर हेल्प्स टू रेसिस्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन आवर बॉडी. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर पैथोजन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती और हमारे बॉडी सेल्स वैसे के वैसे ही फंक्शनल होते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज पीएच. ओके, सो व्हाट डज दिस पीएच मींस? हम हर जगह पढ़ रहे होंगे ना, डाइजेशन में पढ़ा होगा. पीएच दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन. गैस्ट्रिक एसिड का गैस्ट्रिक जूस का कितना है, सलाइवा का कितना है, ब्लड का कितना है. तो ये पीएच कैसे प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ पैथोजन? लेट अस सी. सो हमारे जो एंजाइम्स है दे आर फंक्शनल इवन एट नैरो पीएच. मतलब अभी गैस्ट्रिक जूस का पीएच बहुत कम होता है, करेक्ट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2. तो उस पीएच में भी हमारे जो जूस के जो एंजाइम्स होते हैं दे आर फंक्शनल, राइट? सो एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक किल्स मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये इतने हाई पीएच का फायदा क्या होता है कि खाने के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गए होंगे दे गेट किल्ड. Okay, so because of that high pH level, because of that high acid level, the microorganism which goes inside our body, inside our stomach gets killed. Okay, next में coming to the next part, that is body secretion. So body secretion में here we have an example of tears. So हमारे जो आंसू हैं,
ठीक है, हमारे जो आंसू है उनमें होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम, राइमिंग ना, उसमें होता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं हम लाइजोजाइम। तो हमारे टीयर्स में होता है लाइजोजाइम विच इज एन एंजाइम एंड इट इज अ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। लाइटिक मतलब क्या होता है? लाइटिक मतलब ब्रेकिंग एंजाइम, राइट? सो इट्स अ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। तो वो क्या करता है ये एंजाइम? देखो, जैसे ही जस्ट वॉच द पीपीटी, पीपीटी इटसेल्फ इज स्पीकिंग अ लॉट। सो जैसे ही वो टीयर्स हमारे बैक्टीरिया के ऊपर पड़ता है तो हम जो टीयर्स में जो लाइसोजाइम होता है, इट डाइजेस्ट द बैक्टीरियल वॉल। कैन यू सी? इट डाइजेस्ट द बैक्टीरियल वॉल एंड it kills the bacteria. Okay, so it kills the bacteria because bacteria में उसकी जो cell wall होती है that is pathogenic. So once that it gets digested, बैक्टीरिया का खात्मा हो गया, राइट? सो आंसू भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द tears. Okay. So next, coming to the next part, see what happens when certain cells get infected with viruses. Okay, जैसे हमारे कुछ cells जब वायरस के साथ इन्फेक्ट होते हैं तो दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या कहते हैं हम उनको? इंटरफेरॉन्स, विच आर नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दिस इंटरफेरॉन्स मेक्स द सराउंडिंग सेल रेसिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन। तो ये हमारे आजू बाजू के जो सेल्स है उनको इन्फेक्शन से रोकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक एमसीक्यू भी अपलोड किया था। इफ यू हैव सीन, ये सेम पीपीटी का ही पार्ट मैंने एज अ डिस्क्रिप्शन भी अपलोड किया हुआ है। सो जब भी हमारे बॉडी में नेचुरली अगर वायरस जाता है तो कहीं ना कहीं इट इज रिलीजिंग इंटरफेरॉन्स व्हिच आर प्रिवेंटिंग द अदर सेल्स टू गेट इन्फेक्टेड विद वायरसेस। ठीक है। सो बॉडी सेक्रेशंस में आपका टीयर्स आ जाता है, आपके इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं। सो दीज आर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन टू द सब्सिक्वेंट cells. Okay, so let us see the summary of physiological barrier. So fever, हमने पढ़ा about fever which inhibits the growth of pathogen. Then acidic pH of gastric juice is going to kill most of the ingested microorganism. Lysozyme digests the bacterial cell wall. Interferon makes the surrounding cells resistant to viral infection. Understood? So this is all about your physiological barrier. It's very easy, correct? Now let us go to the next one, that is phagocytic barrier. Phagocytic barriers are सेल्यूलर बैरियर। क्या कहते हैं हम इनको? सेल्यूलर बैरियर। तो ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो अंदर जब हमारे बॉडी के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो दे ट्राई टू ईट इट अप। ओके, दे ट्राई टू ईट इट अप एंड दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। उसको ही हम क्या कहते हैं? फैगोसाइट्स। ये देखो उसने कैसे खा लिया। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। Okay, so phagocytic barriers में examples are neutrophils, monocyte. So these are the phagocytic WBCs, that is the leukocyte. यहाँ से मुझे याद आया बहुत टाइम पहले somebody has told me on the comment section that please upload I think about heart. Yeah, about heart. तो अभी मुझे वो भी याद आ गया है, but let me just cover up, just close the 3 chapters which are open, like biological classification है, cockroach है, ये है, तीनों open करके रख दिया है मैंने. So let us, and I am just planning कि अब हर एक जो भी chapter I should start, I should just wind up also, so that if anybody is watching my channel, obviously कुछ लोग तो देख ही रहे, तो they should at least have at least one पूरा chapter, कुछ chapters होने चाहिए जो वो practice कर सके through channel. तो I'll be soon uploading with the heart also because my students जिनको मैं personally पढ़ाती हूँ उनके लिए भी ये बहुत ही फायदा करेगा. Okay, so phagocytic barriers में हमारे आते हैं WBCs like neutrophils, monocytes. Okay, apart from that, then macrophages which are large irregular shaped cells. ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है मैक्रोफेज का? जैसे कि कफर सेल्स ऑफ लिवर, कफर सेल्स ऑफ लिवर ऑल्सो एक्ट एज अ मैक्रोफेज. हिपैटोसाइट्स तो होते ही हैं, उसके अलावा देयर आर कफर सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय द पैथोजन. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर next barrier, that is phagocytic barrier. Now let us come to the last part of the lecture, that is the inflammatory barriers. Last part है, फटाफट से इसको भी finish up कर देते हैं. So see, let us understand first कि what happens when you have injury. जब आपको कुछ लग जाता है तो क्या होता है? वो एरिया आपका रेड हो जाता है, राइट? ज्यादा जोर का लगा है तो वहां पर स्वेलिंग भी आ जाएगी हल्की सी, राइट? देन पेन होगा, बट ऑब्वियस. देन heat, obviously that area will become warm and there will be a loss of
function. So these are the few things which happen when we have an injury. जैसे for example you have a small cut while cutting the vegetable, so obviously blood is flowing, तो area red हो गया है, थोड़ा सा fluid has come out, तो वो area swell up हो गया है, आपको pain है, and as वहां पे blood का rush था, तो that area has also heat रही, तो मतलब बहुत warm नहीं हो गया, but a little bit warm because blood is warmth in nature. Yes or no? So the series of localized changes due to injury or infection is called as inflammatory response. तो लगने के वजह से, इंजरी के वजह से जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं inflammatory response. Okay, and these are the signs of inflammation. You'll be studying, जब आप मेडिकल करोगे तो you'll be studying about it in detail. इसको डैलर, रूबर, काफी सारे दूसरे नाम हैं जिससे हम उनको कहते हैं signs of inflammation. Okay, so these are various signs of inflammation. Now let us understand कि ये सब क्यों होते हैं. Okay, for now you have to imagine कि आपको इंजरी हुई, नीडल से आपके हाथ में ऐसे प्रिक हुआ, तो क्या क्या चेंजेस होते होंगे. Let us try to understand that. See, this is a layer of skin. Skin के नीचे टिश्यू की लेयर है, टिश्यू के नीचे ब्लड वेसल्स की लेयर है. Okay, so whenever there is an infection, ये देखो infection है या फिर आपको लग गया है, whenever there is a tissue injury, so obviously क्या होता है देखते हैं. I know it's lagging a little bit according to me. See, try to understand. See, यहाँ पर there is a tissue injury. ये देखो, यहाँ पर अगर tissue injury है तो ये वाला जो space है वहां के cells destroy हो गए, and वहां से microorganism are going inside. Can you see? The microorganism are going inside. Now the cells are damaged. हमारी skin के cells damage हो गए, तो now the body will start to repair. Body will think यार damage हो गया है, तो now it has to repair. Yes or no? So now what our cells will do, which are present in the tissue layer, the mast cells of connective tissue get also damaged during injury, and they release certain chemicals. Can you see? They are releasing certain chemicals which are called as histamine. So injury हो गई है, injury के वजह से mast cell destroy हो गए हैं जिन्होंने histamine release किया है. अब ये histamine release होने के वजह से क्या होगा आपका, there would be certain changes which would take place. So let us see what changes will it take place. So now what are the action of histamine? Histamine क्या करेगा, जो नीचे blood vessel है, जो capillary है, उसको dilate कर देगा, उसका size बड़ा कर देगा. तो जब आपकी capillary dilate हो जाएगी तो there will be increased blood flow. Yes or no? So जब capillary dilate हो जाती है, so the blood flow also increases. So as the blood flow has increased, the area becomes red. Understood? So first sign of inflammation का आंसर मिल गया है, redness. Why? Because damaged mast cell ने histamine release किए हैं जिसके वजह से capillary dilate हुई है and the blood flow has increased which causes redness, and blood flow increase हुआ है इसलिए that area has also become warm. Okay? And now as the capillary has dilated, so capillary की permeability भी increase हो गई है, capillaries are permeable. तो capillaries की permeability बढ़ने के वजह से the vascular fluid comes out. See, so now the vascular fluid comes out and it fills the space of the injury, and that is why you get the next sign of inflammation, that is swelling. Clear है? So fluid बाहर आ गया, injury वाले जगह पे accumulate हो गया है, इसीलिए वहां पर हो गई है swelling. And then the vascular fluid, जो fluid बाहर आया है, obviously it is having serum proteins. So this serum proteins try to kill the bacteria. Apart from that, even the basophils, we have studied, WBCs have an ability to squeeze out of the capillaries, and that is called as what? That is called as diapetesis. So basophils of blood also comes out, they also release histamine, and now the WBCs will engulf the pathogen, the neutrophils, the monocytes, the macrophages, they will perform the phagocytosis and they will remove the foreign bodies. Okay, and the damaged mast cell, apart from histamine, it will also release the prostaglandin which will produce the pain. Understood? Clear है signs of inflammation कि कैसे, and finally ज़्यादा हो गया तो you will lead to fever. So let us sum up the entire inflammation. So inflammation is a protective non-specific response to injury or infection. तो जब भी हमें बॉडी में इंजरी या इन्फेक्शन होती है तो हमारे जो एरिया है that becomes inflamed. So it's a response of our
बॉडी। एंड यूजुअली जो भी वर्ड्स के आगे ITIS लगा होता है, इट डिनोट्स दैट इट इज शोइंग सर्टेन इन्फ्लेमेशन। जैसे मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, कंजंक्टिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा। ओके, सो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो नाउ लेट अस सम अप विद द टिश्यू इंजरी और टिश्यू इन्फेक्शन। तो सबसे पहले साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन से बताए थे आपको? रेडनेस बताया था, वार्मथ बताया था, स्वेलिंग बताया था एंड पेन। तो सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी अ टिश्यू इंजरी, तो सेल्स यहाँ के डैमेज हो जाएंगे, राइट? तो सेल्स आपके डैमेज हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका धीरे धीरे आपका जो मास सेल है वहां पे वो भी डैमेज हो गया है। मास सेल हैज रिलीज वॉज टू थिंग, मास सेल रिलीज करता है, पहला हिस्टामिन एंड दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन की वजह से जो कैपिलरीज नीचे होती है वो डायलेट हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका जो फ्लूइड है, कैपिलरी की परमियाबिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है, राइट? So the fluid comes out and it fills up the space where you had injury. So that is the time where you get that swelling. And as वहां पर ज्यादा blood flow हो रहा है तो एरिया रेड भी हो गया है एंड वार्मथ भी हो गया है, राइट? एंड एज कैपिलरी परमियाबिलिटी इंक्रीज हुई है, WBC has a property of diabetes. So they come out like neutrophil, monocyte, macrophages, they come out, they engulf the macroorganism and they destroy them, राइट? एंड लास्ट थिंग, जब ऑब्वियसली आपके जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ है तो दैट इज अ रीजन ऑफ पेन, यू नो, इवन दैट इज अ रीजन ऑफ पेन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। वी विल बी टॉकिंग दैट अबाउट दैट सम अदर डे, राइट? कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन वेन करता है। ओके, इनफैक्ट आई थिंक आई हैव टॉक्ड आल्सो, आई डोंट रिमेंबर। सो दैट इज ऑल अबाउट द टिश्यू इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है? So this is what your NCERT talks about the innate immunity. So it is the immunity which is present since birth, and there are various mechanism by which are present from birth which protects us from injury. Apart from that, there are certain other things like acute phase proteins. These are the proteins present in the blood. There are certain antimicrobial substances which are present in blood which also protect us from infection. ठीक है? So this is all about the innate immunity, and if you have any doubts related to immunity, do write it in the comment box, and do subscribe to my channel, do hit the bell icon, and I'll meet you soon with the next lecture where we are going to talk about the acquired immunity. Till then, bye, take care, and study hard, work for your dreams. Bye.